video, and in this video we are going to read about the chapter The Happy Man, which is a short story written by W.S.Maugham. Approaches to English Book 2. So, what is the main focus question of this story? So, focus question of the story is who is Happy Man in the story? Happy Man kiye is story re. Now, what makes him a happy man? Taku kona happy man boneila. Okay. So, first paragraph. It is dangerous thing to order the life of others, and I have often wondered at the self-confidence of politicians, reformers, and such like who have prepared to force upon their fellows measures that must alter the manners, habits, and point of views. So, it writer kohuchanti, it is probably a dangerous thing for one person to guess or to advise about the another person's life. I have always hesitated to give advice, for how can one advise another how to act unless one knows that the other as well as one knows oneself. So एठी राइटर कहिसंती जणे केमिति ही अन्य जनक लाइफ उपरे निजर माने कोन निजर चिंता को व्यक्त करि परिबो निजर एडवाइस दे परिबो जेते पर्यंत से लोक को ठीक से जानि नाही तो सी किछि एडवाइस दबा योग्य नुहे कि सी किछि एडवाइस देले भी वर्क करि परिबोनी. हेवन नोज आई नो लिटिल एनफ ऑफ माई सेल्फ. तो भगवान जानी चंती मु निज विषय रे ही बहुत कम जानी छी. आई नो नथिंग ऑफ अदर्स. आ मु अन्य विषय रे किछि ही जानिनी. वी कैन ओनली गेस at the thoughts and emotions of our neighbors. आमे हम नेबर्स कर थॉट्स और इमोशन देखि तांको लाइफ ऊपर हुए तो किछि ता एडवाइस दे परु. बट although a stranger life ऊपर किछि एडवाइस दबा बिल्कुल impossible thing. Each one of us is a prisoner in our solitary tower and we communicate with the other prisoners. So आमे निजे निजे होचु गोटे गोटे प्रिजनर्स ऑफ आवर सॉलिटरी लाइफ. आम लाइफ भीतर जहाँ चलुची आम निज एडवाइस को लेकिन आम लाइफ उपरे आमे गोटे प्रकार बंदी ही रही जाउछु. एंड वी आर कम्युनिकेटिंग विद द अदर प्रिजनर्स हु फॉर्म द मैनकाइंड बाय कन्वेंशनल साइंस दैट हैव नॉट क्वाइट बी द सेम मीनिंग ऑफ देम एज फॉर हिमसेल्फ. एंड लाइफ यूनिफॉर्मली is something that you can lead but once. So life कौन गोटे एंतिया जिनस जोटा को तुम थरे ही बंची पारिबो. Mistakes are often irrepeatable. So mistakes गुरा प्रायतः irrepeatable. One cannot repeat it continuously. And who am I that I should tell this one and that how should it lead it? So मु ताले किए जदिया लाइफ टा एते सीरियस लाइफ अनप्रेडिक्टेबल नेक्स्ट मोमेंट रे कौन हो किसी कही पारिबेनी. सो मु केमती जन को प्रेडिक्ट कर देबी से केमिति बंचियो बेली. लाइफ इज अ डिफिकल्ट बिजनेस एंड आई हैव फाउंड इट हार्ड एनफ टू मेक माय ओन कंप्लीट एंड राउंड थिंग. सो लाइफ होची बहुत डिफिकल्ट जिनसो बंचिया पई. आ मु निजे माने राइटर निजे अबिका जहा अछंती सेटा तांको हबा पई बहुत कष्ट लागि. आई हैव बीन टेम्प्टेड टू टीच माय नेबर्स. सो माने राइटर कौन कहते that he has not never been tempted to teach his neighbors what he should do. So neighbors माने भी even if तांको लाइफ रे कौन करिवे राइटर ताकू भी केबे जज करी नाहंती कि एडवाइस दे नाहंती. But there are men who flounder at the journey start. The way before them is confused and hazardous and on occasions, however, unwillingly I have been forced to point the finger of fate. So एंती किछि पर्सन्स माने अछंती जो माने मते फोर्स करचंती कहा को राइटर को फोर्स करचंती टू गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन देयर लाइफ. समटाइम्स men has said to me what should I do with my life. तो राइटर को जणे लोक पचारथिले कि से निज लाइफ सहित कौन करिवे बेली कि राइटर को लोक जणे पचारथिले. And I have seen myself from a movement wrapped in the dark cloak of destiny. So, राइटर जो मोमेंट रे से लोकटा तांको पचारथिले कि सी तांको लाइफ रे कोन करिवे राइटर को एडवाइस दबा पई पचारथिले. राइटर फील करले as if he was covered with a black cloth. Someone has covered him in a black cloth.
but fortunately the writer once had gave a piece of information which was found highly effective. So thore se writer gote emitia information deithile se lokotaku jota highly effective thila. I was a young man and I lived in modest apartment in London near Victoria Station. So thile se London ro gote apartment re rohle Victoria Station pakhare. Late one afternoon when I was beginning to think what I had worked enough for the day. तो थरे जतबले राइटर बसिकी भाबुथिले कि हाँ से एनफ काम कर सारचंती आज दिनक पई से गोटे बेल सुनिथिले I heard a ring at the bell. I opened the door to a total stranger. So मु जतबले रिंग सुनिली बेल रे मु कबाट खोलिया पई गली मु कबाट का को खोली गोटे कंप्लीट स्ट्रेंजर जहा को मु जानिनी. He asked me my name. से मते मो ना पचारले. I told him. He asked if he might come in. Certainly. से एमिति पचारले as if से भितर को पसि आस्थान्ते. Then what happened? I led him into my sitting room and begged him to sit down. So writer तांको request कले से stranger को बसिया पाएंगी. He seemed as if a trifled embarrassment. I offered him a cigarette and he had some difficulty in lighting it without letting go his hat. When he satisfactorily achieved his feat, I asked him I should not put it on a chair for him. He quickly did this and while doing it, dropped his umbrella. So see tanko umbrella side re rakhiki cigarette and sela pare writer को किछटा जिंसो कहिले. I hope you don't mind my coming to see you like this, he said. So ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ମୋ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସିଯିବାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କରିନ. କାହାକୁ? ରାଇଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର. My name is Stephens and I am a doctor. You are in the medical, I believe. तो ସେ ରାଇଟରଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? You are in the medical, I believe. So ରାଇଟର କହିଲେ yes, but I don't practice. So ରାଇଟର କହିଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେନି. No, I know. I have just read a book of yours about Spain and I wanted to ask you about it. सो से स्ट्रेंजर कौन कहले? मु आपणकर राइटर को कहले मु आपणकर गोटे बही पढ़ी स्पेन विषय आउ मु आपन को से विषय किछटा क्वेश्चन पचारिया पई आछि. इज इट नॉट अ वेरी गुड बुक? आई एम अफ्रेड. सो एटा तो एते भलो बुक नुहे. ऑथर टिके माने राइटर टिके माने आश्चर्य हेकी कहले सेटा तो एते भलो बुक नुहे. The fact remains that you know something about Spain and there is no one else I know who does. So writer को stranger कहउचंती मु भाबुची जेहेतु आपण स्पेन विषय गोटे बही लेखिचंती सो मु जानि पारुची कि आपण को तांको स्पेन विषय रे किछि एक्सपीरियंस थिबो आ आपण गोटो अधिक भलो मते कि कहि परिबेनी ता विषय रे. एंड आई थॉट परहैप्स यू वुडंट माइंड गिविंग मी सम इन्फॉर्मेशन. सो मु भाबिली आपण एते किछि माइंड करिवेनी मते स्पेन विषय रे इन्फॉर्मेशन दबाकू. आई शैल बी वेरी ग्लैड. सो राइटर कोन कहले आई शैल बी वेरी ग्लैड अबाउट दिस. ही वाज साइलेंट फॉर अ मूवमेंट. ही reached out of his hat and holding it on his one hand absent-mindedly struck in with the other. So सी गोटा हाथ रे निज हैट को धरले आ गोटा हाथ रे स्ट्रोक करथिले. आई समराइज दैट इट गेव हिम कॉन्फिडेंस. सो राइटर को कोन लागला सेटा पदे तांको कॉन्फिडेंस दोथला. आई होप यू वोंट थिंक इट वेरी ऑड फॉर अ परफेक्ट स्ट्रेंजर टू टॉक यू लाइक दिस. सो राइटर को एटा बहुत ऑड लागला. तो सी कोन कहले कि ऑफ कोर्स गोटे स्ट्रेंजर आसी तुम घरे बसी एंती तुम सहित कथा कहले ऑथर को अखाड़ुआ लगी. ही गेव अ apologetic laugh. So writer gave a apologetic laugh. I am not going to tell you the story of my life. तापरे राइटर को कौन कहले? सो राइटर को से स्ट्रेंजर कहले आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ माय लाइफ. मो लाइफ रो स्टोरी विषय कहया पे जाउनी. When people say this to me, I always know that this is perceivably what they are going to do. So जेमिति से लोक जने लोक जदि कहबो मु निज लाइफ विषय कहया पे जाहुनी ता माने एक्जेक्टली से सेया ही करबो. से निज लाइफ विषय ही कहबो. I do not mind. In fact, I rather like it. So मु आको माइंड करेनी, मु आको पसंद करे. I was brought up by two aunts. I have never been anywhere. So राइटर को से स्ट्रेंजर कौन कहले? मु
मते मो दी जण आंटी माने पालिचंती from small till big till now. I have never been anything. So सी केबे हेले भी किछ करना I have never done anything. I have been married for 6 years. I have no children. I am a medical officer at the Camberwell Infirmary. Infirmary means a small hospital. I cannot sick it anymore. So से राइटर को पाखे जे स्ट्रेंजर बसले तांको कोन कहउतले ना मते छोट बेलु मो दीटा आंटी पालिचंती आ मु सेंती किछि करे नै मु 6 वर्ष हैला मैरिज करछि बट मोर के चिल्ड्रन नहंती आ मु मेडिकल ऑफिसर अछि at the Camberwell Infirmary and I cannot stick it anymore. I'll continue करिया पे चाहूनी. There was something very striking in the short, sharp sentence he used. So किछिटा गोटे अखाडुआ थिला से sentence रे. He used very sharp sentence. They had a forcible ring. So I had not given him more than a cursory glance. But now I looked at him with curiosity. So first कौन है राइटर को तांको स्टोरी ऊपर एते इंटरेस्ट आसु नथला बट जतबेले से स्ट्रेंजर स्टार्ट करिले निजो स्टोरी कहिबा सो राइटर को हठात क्यूरियोसिटी आसिला से तांको स्टोरी को बहुत जिज्ञासा सहित सुनिया पे लागिले. He was a little man, thick set and stout, of 30 perhaps, with a round red face from where stone smell, dark and very bright eyes. His black hair was cropped close to the bullet-shaped head. He was dressed with a blue shirt and good deal with the worse for wear. It was a baggy at the knees and the pockets were bulged untightly. So से person करो wear माने से केंती ड्रेस पिनथिले माने तांकर appearance केंदी थिला से माने strong थिले stout थिले 30 years रो देखा जाउथिले तांको face टा round और red थिला. ओके सो तांकर eyes गुरा को पूरा black थिला shining थिला से blue color shirt माने suit पिंदी थिले आ तांको नी पाखरे सेटा baggy थिला and pocket गुरा as if bulged out थिला untightly. So you know what the duty are of a medical officer in an infirmary. So the stranger question तमे कोन जानि छ medical officer रो infirmary रे केते काम थाए. One day is pity much than another. So गोटे दिन अन्य दिन ठारू आहुरी वर्ष थाए माने बहुत सारा काम थाए. And there all I have got to look forward for the rest of my life. Do you think it is worth it? So it means of livelihood, I answer. So writer कौन कहले हाँ livelihood पे करिया पे पड़े इतना काम. Yes I know the money is pretty good. So से stranger कौन कहले से कहले कि हाँ मु जानी ची money तो भलो मिले इथरे. I don't exactly know why you are came to me. So writer कौन कहले मु exactly जानी नहीं तमे कोथ पे एठी के आछो. Well, I wanted to know whether you thought there would be any chance for an English doctor in Spain. So कौन English doctor मानन को पई किछि vacancy अछि किछि chance अछि English doctor को पई Spain रे. So the writer asked why Spain? I don't know. I just have a fantasy for it. It is not like a Carmen, you know. So the writer said like this. तापर कौन हैला but there is a sunshine, there are good wines, there are colors and there are air you can breathe. Let me say that what I have to say straight out. Then I heard by accident that there was no English doctor in Seville. So से कौन सुनी थिले माने जो थिले स्ट्रेंजर पर्सन से सुनी थिले कि सेवाइल रे केही इंग्लिश डॉक्टर न थिले. सो से सेइत पे राइटर को पचर थिले बट राइटर कोन कहले यस स्पेन रे एते मनी न थाए बट द राइटर कमेंटेड योर जॉब इज सफिशिएंट. सो जॉब ता तांको पाखरे सफिशिएंट थिला बट the stranger didn't want money. So what does he want? He wanted the plenty of sunshine, plenty of wine, colors, fresh air to breathe. He wanted the soulful happiness. Okay, he was interested for all this. He wanted to enjoy his life.
So he wanted to change. He had heard, so the stranger person had heard that in Seville there is no English doctors. So he was asking to the writer of the that book of the Spain that is there any vacancy or is there any chance in a Spain to be a English doctor? So do you think I could earn a living there? So तमें कौन भाभी पाच से राइटर को कौन पचारे से स्ट्रेंजर स्टीफेन जी थिले सी राइटर को पचारे कि कौन मु निजे चलिया पई कि मु सेठी एनफ अर्न करि परिबी इज इट मैडनेस टू गिव अप अ गुड सेफ जॉब आउट ऑफ अनसर्टेनिटी कौन खाली जस्ट टिके अनकंफर्टेबलनेस फील होची बेली गोटे भलो जॉब को छाड़ी दबा कथा की What does your wife think about it? So writer पचारे स्टीफेन को कौन टिके अनसर्टेनिटी होची बेली कौन भलो जॉब को हाथ छड़ा कर दबो भलो जॉब काम करूच भलो भलो पैसा इनकम करूच कौन स्पेन जीवा निहाती दरकार सो व्हाट डज योर वाइफ थिंक अबाउट इट शी इज विलिंग इट्स अ ग्रेट रिस्क सो सी भी विल करूची बट एटा बहुत रिस्क ओके राइटर सेज दिस इज वेरी मच रिस्क आई नो बट इफ यू say take it I will if you say stay where you are I will stay so stranger कहउचंती माने कोन स्टीफेन कहउचंती राइटर को जदियो तमे कहबो स्टे कर जाओ सेठ रही जाओ मु सेठी ही रही जिबी so he was looking at me intently with those bright dark eyes of his and I knew that he meant what he said I reflected for a moment. Your whole future is concerned. You must decide for yourself. But this I can tell you if you don't want money, but are concerned to earn just enough to keep your body and soul together, then go. For you will lead a wonderful life. So, writer कौन कहले जेतबेले स्टीफेन तांको पचारले कौन मु एनफ अर्न करि परिबी बंचिया पई कौन सेठी किछि जागा अछि इंग्लिश डॉक्टर को पई सो लाइकवाइज एमती मेंचाई क्वेश्चन पचारे सो राइटर कहले जदियो तुमको किसी असुविधा नहीं लाइफ रे यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ चिल आउट इन योर लाइफ सो यू कैन गो टू स्पेन एंड यू विल इनकम एज मच यू कैन कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर तुम जी खाई पार जी डेली लाइफ रे रही से पैसा ही तुमको मिल स्पेन रे बट यू कैन लीड अ वंडरफुल लाइफ देयर Then he left me. I thought about him for a day or two and then forgot. This episode passed completely from my memory. So writer कौन कहले सी जेंती एतिकी मते पचारि की गले मो मुंडरू तांको चिंता एबाउट हे गला दिने दी दिन पई मु तो तांको विषय रे भाबिली बट आफ्टर फ्यू डेज मु तांको विषय रे भूली गली आ ए एपिसोड ता मो मुंडरू इरेज हे गला Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.